हाय गौरव, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Sir, you are not audible. एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. एम आई ऑडिबल? No, sir. Am I नो. audible, sir? यस यू आर. Sir, wait, sir. लेट मी चेक. एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, yes, sir. Now you are audible. ग्रेट. ओके, सो लेट स्टार्ट. चलिए, कुछ ज़रूरी जानकारी एक बार आप मुझे दे दीजिए. अपना पूरा नाम बताइए एक बार. Sir, Gaurav Sharma. किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया आपने? Sir, PGD Computer Science. पीजीटी. Yes, sir. ओके, ग्रेजुएशन आपकी क्या है? Sir, M.Tech है, B.Tech है. एम टेक. कहाँ से किया है? Sir, Guru Gobind Singh International University, Delhi. ओके. और बीएड तो आपकी होगी नहीं. Yes, sir. है मेरी B.Ed है. है, I बीएड have है. done B.Ed. गुड. Yes, sir. बीएड कहाँ से? Sir, MDU, Maharshi Dayani University. ओके ग्रेट. तो आपकी बीएड रेगुलर है? Yes, sir. Regular. ओके, तो शुरू करें. हाँ. अब बोलिए, कुछ Yes, कहना है sir. तो. कुछ कह रहे थे आप? Sir, yes, regular है. From 2018 to 20 मैंने B.Ed करी थी. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस सर मेरा जो है एचटेट भी क्वालिफाइड है पीजीटी. अच्छा अच्छा. सीटेट लेवल 1 भी है मेरा. सीटेट लेवल 2 भी क्वालिफाइड है ओके, फॉर ठीक है. टीचिंग शुरू पर्सपेक्टिव. करें फिर. यस सर, डेफिनेटली. हाय गौरव, हाउ आर यू? फाइन सर, सो एब्सोल्युटली फाइन. व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन? ऑल गुड सर. सो एनीथिंग स्पेशल अबाउट टुडे? टुडे सर नथिंग सो स्पेशल एक्चुअली. आई एम इन्वॉल्वड इन स्टडीज फ्रॉम मॉर्निंग. दिस इज ओनली स्पेशल थिंग आई एम डूइंग फॉर द ओके. लास्ट 2 सो years. यू आर हियर फॉर एनवीएस कंप्यूटर साइंस इंटरव्यू. Yes sir, it's NVS TV. PGT Computer Science interview. What do Yes. you think? As I can see that your qualification, you are MTech from Guru Gobind Singh University. So, what do you think? What is the requirement of computer science in a school? Sir, computer science, basically computers is a field which relates everything. Means like if you want to study maths, you can relate it with computer. If you want to study science, you can relate it with computer. By making presentation, you make this presentation of the or the subject more presentable compared to rather using only the regular TLMs. You can use computer as a resource for enhancing the teaching and methodology and make the student understand more. And apart from that, That sir, is that is okay, but what do you think? What is the relevance of teaching computer science to class school students? sir, basically, I want to explain this with a quote by Steve Jobs. He said, "Everyone has to learn computer because it makes everyone to think." He said these lines that everyone has to learn computer because it makes everyone to think. It makes everyone to means to critically think about anything. मतलब it makes you think. So computer is a very important subject in perspective that in the modern technology, most of the things are getting shifted towards AI, machine learning, I'm really amazed that and you are coding. MTech. Still, you want to come in education sector. In spite of this, you could make some greater softwares and greater programs. Why you are here in school education? Sir, I want to be a teacher from the. Actually, there is a story behind it. When I'm in 10th, I means very much motivated by my teachers. Teachers, they inspired me a lot, and from that time onwards, I want to be a teacher. To means to help the student. I am more sensitive towards the requirement of students, and I want that I can help them in a better way to learn things and support them. So, what is your So it is specialization an in intrinsic computers? motivation within me to be a teacher. What is your specialization in computer? So my specialization in information technology, computer science Okay, as a stream. that Uh, is okay. to be So, specific, I am more towards the data science and semantic web. data science. So, what Yes, sir. is data science? Can you So please data explain? science is basically the analysis of the data for the generation of the patterns or information that is relevant to support a business or to support a decision for enhancing the means the results that are generated till now. Means you can able to So more you have just specifically. gone through the theoretical background, or you have the practical knowledge also.
Regarding data science, sir. Yes. Yes, sir. I have practical lines. I have studied Python as a That is okay. You language. have studied Python. It's great. Have you Yes, sir. ever studied any kind of data of any organization or any school or No, any? sir. No, sir. No, sir. I have studied the sample data that is available on the for the purpose of analyzing. I have studied the sample data because this kind of data is not directly provided by the companies so that we can analyze it. There is a sample set of data provided on the internet or through different websites, which make this So, what do data you for think? the. How you can utilize this skill of data science and data analysis in school regard? Sir, in school regard, basically, sir, when we study the curriculum or the subjects of the computer science students or information practice, they are itself studying Python, which is mainly designed for the purpose of data science. And the future of the means coming in coming future is only on the data. You can see big data is there, the new technology which is used for analyzing of the data. We itself, every person generates a lot of data on the daily basis per second. About a TB of data is generated by individual over a month. So in coming future, everything has to be organized. It is a big means stream for which many research are going on. So the analysis and the purpose of using the data can be means streamlined, and it becomes more efficient for the means decision making and making the business and to do things very purposefully. Gaurav, as a computer science teacher in schools, Yes, sir. actually, you are teaching computers to the higher student class 11 and Yes, sir. 12th. It means computer is not just a subject for them, because as Yes. we know that computers, what is computer, just typing on computer, Yes, sir. these Yes. things go on, these things generally goes in lower classes. Yes, sir. As you are teaching in class 11th and 12th, you have a Yes, sir. greater responsibility that you want to Yes, sir. show them a next level approach, a next level era where they can imagine their future, because our Definitely, sir. traditional school system, they focus on arts, commerce, science. As a computer science teacher, you are showing them a new domain where they can grow, where they can develop their career. So Yes, what do sir. you think, how you are going to showcase these things to your students? Sir, actually, as we see that we are shifting towards the vocational studies of for the students from the class 10s onward, and computer can act as a best tool for studying the vocational studies, and it is the best option for opting means a job or opting for a job. It is the best tool which a student can opt from the early stage. I think there's a deficiency of teaching computer. It has to be taught from the early stages, from the class 1 and 2. The private organization are letting these students to study the coding from the age of means from the class of first class. If they are able to be, why we not started the computer till the from the means early ages of the student, so that they can interact more and they can more comfortable while using. Sir, I myself have has recognized that BTech students, those who I am studying, they come for the BTech, but they are from biology backgrounds. They don't know even how to open the computer. Okay. This is the scenario. So I want them to, every student has to be means they have the power to use the computer as a better tool, so that so they are more competent toward the more competent for the global market. They can identify themselves as an individual who knows the computer very well, and compete with the global market. And it should be started from the class ones onward. It is very late that we are studying it from the level when the student has almost completed his studies, and now he is getting to know about what is computer. So it is a very important subject for to be taught, and it opens the many gates for the students, so they can compete all over the world and do a research and everything they can do on a single system, on a single table, in a single room. Okay, It's very much of the. another thing I want to know, can you please explain the difference between an operating system and Windows? So operating system is a system software whose example is Windows. Windows is a product of Microsoft, which is itself an operating system. It helps to make the hardware utilize in a better way by Nowadays the. artificial intelligence is growing. Nowadays there is Yes, no sir. need to do so much hard work in the web development and all. Now Yes, recently sir. recently a Yes, sir. thing has emerged like a Yes, sir. giant chat gpt. I think you know about it. Can you please Yes, explain sir. what is chat gpt?
So Chat GPT basically a tool. It is not a new tool. It is an advanced version. It is already built in around 2000s. It is advanced tool with more functionality or usability of AI. As the time advances, that AI also advances. It is a tool for based on AI intelligence, and it helps to get the answer from the servers of the Chat GPT on the basis of the word processing and the speech processing that we talk to the chat GPT, Do you think that it reverts the answer. things like Chat GPT is good for human mankind? Sir, in it has to everything has two perspective, good or bad. Sir, internet is also good or bad. It has two perspective. It either good or it has bad. It depends upon the usage of the things. Everything has two perspectives. So chat GPT I think has two perspective. Either it will be beneficial for the humanity. If you do not use it properly, it will be harmful for the humanity. Don't you So think there are that two perspectives. using such kind of developing such kind of artificial intelligence like Chat GPT, that they can instantly create anything? So what do you think? Will not it will reduce the employability of any individual? Definitely, sir, it will hamper the employability and makes uh, the second perspective is very sad that it makes the human itself who is developing it. It makes themselves as a obsolete substance of the environment or the culture. So it has that perspective, but what can we say? But we have to move with the trending technology and we have to develop it because it is there, sir. I don't disagree with the statement that it is not there. Uh, in future, we have to be adjust with these technologies, and this hampers the Where do you think India in next 20 year in terms of technology? India in next 20 years, sir. I think India is growing at a very fast speed, but I think, sir, the very fast speed, and we are more advanced. We are developing like defense equipment within the country, and we are developing like we are the fifth GDP economy, and we beat the British, or you can say Britain in last few months. So I think in 20 years, India will be the first or second means developed. It will be a developed country as the vision of the government, like Make in India, and Have they you are more heard focused about a towards the new education. operating system which has recently developed by India? Bharat OS, sir. Bharat OS is a recent developed by the India. So it is a very important step because developing an OS is very critical role. Very critical it means very critically it is being developed and it has the efficiency. So I think or I am confident that India will be a developed country within the 20 years as per the rate we are going towards the achieving of the 5 Can you trillion list any economy. two websites or two companies which are among top 100 websites in the world, which comes Two, from sir. India? Yes, sir. Amazon is one of the best is selling and platform having Amazon is OTT platform. Amazon, related to India, I want to say, which is being developed in India, India. which is developed in India, sir. The website developed in India basically, sir. Flipkart is one of the developed website of India, and apart from Flipkart that, sir, currently they is are owned by. basically sir What shifting do you from think? the app. Flipkart is currently owned by India or someone else? So it started in India, but means collaborated, or you can say there is a share of the other countries also. There is investment from other sources also. But It is sir, now the already trend has acquired by another institution known as yes, sir, Walmart. but it started in India. Like sir, the shift towards the website, we are going more towards the application mode. Okay. Like a company try to develop application more rather to develop a website because the accessibility of every person is through the mobile, and they want to get the access through the application's best way or more convenient way. So I think Okay. there What is full form of UPI? sir, UPI, universal payment sir, I'm not remembering. No issue. What do you think? UPI can be transcripted, can be copied? No sir, there is a encryption technology which is used within UPI. It cannot be copied easily. Recently, a release note published by the UPI institution. They said that UPI coding is now will be a open system, and anyone can integrate the UPI system in their application. What do you think? It is good or bad? No, sir, it is very bad for the means like we do not allow UPI to be an open source because Then it the is government very has done bad in this.
Because Sorry. already government has released this note that UPI can be integrated in any application. So it can be integrated with application, but you are not make the source code available for Yes, everyone. good. It has to be integrated. It is a very means you are challenging Mastercard, Visa card through our system like UPI we have developed. So it is very Bharat Pay. These are the What do you means. think the foreign currency exchanges in digital world? Sorry, sir, I'm not getting you. Digital currency exchanges in digital world, In what relevance, sir? I'm not like getting. dollar to Yes, sir. rupees. If I want to purchase a dollar, then Yes, sir. let's say if I purchasing it now, the current Yes. price is 82 point something. Yes, sir. Yes, sir. How this price is being decided? Try to decide upon the means reserves associated with the each individual country. They have the reserves of the dollar Okay, what do you because think? it What is is a standard. blockchain? Blockchain is basically, sir, a technology where we use means we store the individual information at the various locations, and a user does not able to find out where that information has been stored. So it is a Cryptocurrency is good or block bad? which is staged. Sorry, sir. It Cryptocurrency is is good good, or sir. bad? It is good, sir. It is very good for the means it provides a lot of security for the data to be stored in multiple sources. A hacker cannot able to find out where the actually the data has been stored. So it is a very good technology. It is advancing technology. Okay, so cryptocurrency Yeah. gives boost to the economy of any nation or it hampers it. So it depends upon the basically, sir, it is a currency. There is no means drawback. I think there for the cryptocurrency. It is also based on blockchain. It Then proves why the country. Indian It government proves has the levied huge taxes on exchange of cryptocurrency? sir, exchange of because they want to control it in a way that they earn it from. It is a technology from which the government want taxes, and most of the many people are earning from it very much. So it is good that we collect the taxes from this way also. Okay, Only thank you, that. Gaurav. This is the reason. Thank you, Yes, Gaurav. sir. You had done a great. We had a great talk, and Yes, sir. you Thank did you, sir. fantastically well. Very nice, great. So you have a good background knowledge of this particular sector. गुड. क्या Yes, आपने sir. एन सी आर टीज को देखा है कि क्या है सिलेबस Yes, sir. 11 12 मैंने का? 11 12 की thoroughly एनसीईआरटी पढ़ी है. बहुत बढ़िया. Both अगर वो आईपी आपने एंड कर रखा है कंप्यूटर. तो दिस विल गिव यू अ पॉजिटिव साइड इन इंटरव्यू. Yes, sir. पाइथन जो है मैंने अच्छे से पूरा कर लिया. एनसीईआरटी जो 11 12 है वो completely is based on Python है. So I've सो gone through ग्रेट. both. तो Yes, sir. पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें, यू हैव अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेज. बहुत बढ़िया, Yes, बहुत sir. अच्छा है. ठीक है. और Yes, sir. आप बैकग्राउंड की भी नॉलेज बहुत अच्छी रखते हैं, और जितने भी सवाल मैंने पूछे उस सवाल का आपने अच्छे से जवाब दिया. कहीं कहीं थोड़ा बहुत इधर इधर उधर हुआ, बाकी सब ठीक है. जैसे ओएस की मैंने बात करी तो वो भारत ओएस नहीं है, BHAR भार ओएस है. अच्छा भारत. Okay. ओके, तो वो था. और जो दो वेबसाइट्स बताए वो अनसर्टेन था, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको बता पाए. फ्लिपकार्ट, Yes, यस, sir. इट इज़ डेवलप्ड इन इंडिया बट नाउ इट इज़ Yes. ओन्ड बाय वॉलमार्ट. हाँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये एम्प्लॉयबिलिटी को हैम्पर करेगा या रेस करेगा, मतलब कुछ नेगेटिव साइड है इसका. तो वैसे तो ठीक है, लेकिन हर बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ असल में एम्प्लॉयबिलिटी कभी भी हैम्पर नहीं होती. असल में Yes, sir. होता क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, पुरानी टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग अब किसी काम के नहीं रहते. कहने का Yes, sir. मतलब ये They है. has to upgrade. Yes, sir. अब They उनको has to अपग्रेड upgrade. करना पड़ेगा. अब एआई काम Yes, कर रहा है तो definitely. उसमें भी एडवांसमेंट होगी. तो जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. वो डिपेंड Yes, करता sir. है, वो अपने प्रीवियस डाउनग्रेडेड नॉलेज पे शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन अपग्रेडेड नॉलेज पे वो बहुत कुछ कर सकते हैं. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, एम्प्लॉयबिलिटी उसी हिसाब से बढ़ती है. ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई एग्ज़ाम दे Yes, देंगे sir. काम हो जाएगा. Yes, sir. इसके अंदर हमको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा. जितना हम अपस्किल Sir, करते जाएंगे. I think government jobs are also being evaluated through AI in हाँ, future. बस वो एआई के That- थ्रू ही कर रहे हैं. ये जितना भी Sir. सारा सिस्टम चल रहा है अब तो बढ़ गया ना. जब टीसीएस ने क्या कर Yes. दिया, टीसीएस ने इस चीज़ को Yes. बढ़ाया, ये कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है. तो Yes, sir. हम इसको पॉजिटिव तरीके से भी बोल सकते हैं. आप इसका जवाब अगर ऐसे दें कि ये टेक्नोलॉजी Okay. अगर क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो हमारे जो बच्चे होंगे It is उनको a तो कुछ समझ negative में नहीं sign. आएगा.
yes, वो तो हमारे स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि भाई कल को हम आज कुछ पढ़ के जा रहे हैं, कल को टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। बल्कि बच्चों को yes, पढ़ाते वक्त हमको ये बताना पड़ेगा कि आप आज की टेक्नोलॉजी सीख करके हमेशा एम रखिए कि जितनी भी एडवांसमेंट आएगी उसको आपको अपने साथ इनहेरिट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा yes, इनहेरिट करते जाएंगे आप बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। और टेक्नोलॉजी में एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, बाकी किसी yes, सेक्टर में ऐसा नहीं है। वहाँ पे yes, आप yes, मल्टीप्लिकेटिव जाएंगे, इसमें एक्सपोनेंशियली yes, हम ग्रो करते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा मोटिवेट करिए, मुझे लगता है सुनने में भी बहुत अच्छा yes, लगेगा। yes, yes, sir, डेटा yes, साइंस है, बहुत yes, अच्छे से बताया। डेटा साइंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने जब ये पूछा कि आपने कोई प्रैक्टिकल किया है, तो वहाँ yes, पे sir, आपने बताया कि आपने नहीं किया है। लेकिन नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोई सैम्पल डेटा लेकर के अपने माइंड में ज़रूर कोई एनालिटिक्स लेकर के चलिएगा कि आपने इस डेटा yes, को एनालाइज किया है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के टीचर का स्कूल में सिर्फ पढ़ाने का तो ना के बराबर काम होता है। yes, sir, आपको yes, सिर्फ sir, मुश्किल से दो या तीन पीरियड मिलेंगे स्कूल में, और इससे ज़्यादा yes, कुछ sir, नहीं होगा। बाकी स्कूल संभालने का काम आपका ही होगा। yes, sir, ठीक है, इस सबसे ज़्यादा बर्डन अगर किसी स्कूल में अगर किसी टीचर के ऊपर होता है पढ़ाने के अलावा, तो कंप्यूटर साइंस टीचर के ऊपर होता है। क्योंकि स्कूल के सारे टीचर ना हाथ हाथ घुटने टेक देंगे, हाथ हाथ ऊपर कर देंगे, कहेंगे जी हमको तो नहीं आता कंप्यूटर। ठीक है, yes, और sir, सारा काम करना पड़ेगा आपको। जितना भी कंप्यूटर sir, का, जैसे जितनी भी I, वेबसाइट मेंटेनेंस है, डेटा अपडेशन है, सारा काम वो आपको दे देंगे। जी आप तो कंप्यूटर साइंस नहीं कर रखी है आपने, आप क्या हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो। इस तरीके से दे ट्रीट यू। definitely, तो ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। लेकिन yes, ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए, जैसे सीबीएसई का काम है तो सीबीएसई का काम होगा, एग्जाम्स होंगे, तो सारी हैंडलिंग बैकएंड की और ये सारा जो है वो आपको ही देंगे। अब हर एक नवोदय विद्यालय की अपनी एक yes, वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के अंदर डेटा को अपडेट करना, yes, sir, जो स्कूल का जो सारा जितना भी डिजिटल काम होगा वो सारा आपको ही दे देंगे। yes, तो ऐसी स्थिति में इस बर्डन के साथ निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बात यह है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, आप काम करेंगे नहीं करेंगे वो तो स्कूल में रिक्रूटमेंट होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जब तक आप स्कूल में नहीं हैं, yes, जब sir, तक आप हाँ, जब तक आप स्कूल yes, में sir. नहीं गए हैं, अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ तो आपको ये चीज़ बतानी ही पड़ेगी कि किसी भी तरह की कोई चीज़ मिल जाए तो वो मैं करने में एफिशिएंट हूँ। मतलब एनालिसिस की अगर Yes, बात sir. करें कि आपने कोई Definitely. डेटा I'm, एनालिसिस। sir, I love to use the office of automation tools in means daily work, हाँ, तो like आप ये using कह Excel. सकते हैं कि जैसे Yes, मैंने sir. रिजल्ट का ऑटोमेटेड टूल बना रखा है, या फिर मैंने Yes, लास्ट ईयर के सीबीएसई रिजल्ट को एनालाइज किया था, या फिर कुछ भी yes, sir. कि लास्ट In ईयर Excel. कुछ भी ऐसा, आप अभी कुछ सैंपल अगर आप स्टडी कर लेंगे, Sir, क्योंकि अभी तो आपके पास काफ़ी I टाइम है। myself do the analysis of the students of the result of BTech through the Excels and other tools. तो किया है ना, Uh, तो आपको yes, sir. बजाय Yes, ये sir. कहने की कि मैंने कुछ की, क्योंकि आज की डेट में क्या है, कंप्यूटर साइंस हो या बीटेक हो या बीसी एमसी हो, ये सब क्या करते हैं, इसमें से 90% लोग सिर्फ थियरी पढ़ते हैं, इनको काम Yes, करना sir. नहीं आता है। और जब Yes, इनको sir. काम करना आता ही नहीं है तो जब इनको काम ही नहीं करना आता तो कंप्यूटर करने का कोई Yes. फ़ायदा नहीं है। Yes, sir. Definitely, ठीक sir. It है, is an application type of एप्लीकेशन work है you ये, कंप्यूटर का मतलब ये तो है नहीं कि आपने रट्टा मार लिया, यहाँ पे रट्टा नहीं चलता। certainly. तो Yes, ऐसे sir. में जब आपसे बात करी जाए, तो वैसे तो आपसे बहुत सारी बातें करके सारी बातें क्लियर हो गई कि आप बैकग्राउंड की बहुत नॉलेज रखते हैं। Yes, लेकिन sir. प्रैक्टिकबिलिटी की अगर बात करी जाए, क्योंकि एक हमेशा नेगेटिव साइड बनता है कि एक कंप्यूटर साइंस का टीचर क्यों टीचिंग में आ रहा है। Pure teaching, man. क्योंकि Definitely, sir. वो एक कंप्यूटर में इतना बड़ा स्कोप है, और जो आपका Yes, sir. इंटरव्यू लेंगे वो भी इसी बैकग्राउंड के होंगे। वो सब Yes, sir. जानते होंगे कि वो खुद अगर यहाँ पर आए हैं तो हो सकता है कि वो वहाँ पर अपना फ्यूचर ना देख पा रहे हो, इसलिए वो यहाँ आए हैं। तो Yes, हर एक sir. बंदा यही चाहता है कि कहीं इसमें Sir, कोई कमी actually, तो हाँ। currently I am also teaching in a college. वो तो ठीक है, वो तो सही Yes, बात sir. है। And लेकिन from लेकिन yes, sir. एज एन एमटेक Yes, मैं sir. आपको वो बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड सोच क्या चलती है Yes, किसी sir. के भी Yes, दिमाग sir. में। Oh, I तो am उस सोच को getting आपको it, sir. सरपास करना है कि आपने ऐसा क्यों किया है। ये Yes, डिसीजन sir. आपकी हो सकता है कि आपकी मजबूरी नहीं है, या आपकी ज़रूरत है, या फिर आप ऐसा चाहते हैं। लेकिन Yes, sir. एक से प्री जुडिस में हो सकता हूँ एक कंप्यूटर के कैंडिडेट के साथ कि भाई ये बंदा अगर सब कुछ छोड़ करके अगर यहाँ टीचिंग में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद इसको वहाँ पे कुछ नहीं आता, Yes, sir. या तो वहाँ पे कुछ Definitely. एक प्री जुडिस हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. और Yes, उस sir. प्री जुडिस को ही आपको क्वालिफाई करना है कि Yes, भैया sir. मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे बाई चॉइस हूँ। By choice. ठीक Definitely, है, sir. और इसी के अंदर जब आपसे जैसे मान लो कोई भी आपकी बातों से जब सब कुछ झलक ही रहा था, लेकिन जहाँ पर Sir, बात there is एनालिस। हाँ बोलिए। cross means यस। answer to this question that I have done for B.Ed for this purpose only. I have qualified all the TET for this purpose only,
and I want to be a teacher in a way. हाँ, Means I यस। have the intrinsic motivation for this job. It is not that I am forced or I have no other options to do. Means like ये भी कर सकते हो, उसके साथ आप ये भी बोल सकते हो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ करके मैंने कंप्यूटर का भी बैकग्राउंड का डेटा एनालाइज किया है और मैंने पाया है yes, कि 80 to 85% कैंडिडेट जो कंप्यूटर करते हैं वो yes, उसके जितना कॉम्पिटेंट नहीं होते, हो सकता है उनको yes, उनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैंने yes, जब yes, इसको एनालाइज किया तो पता चला कि बेसिक्स से ही उनको कंप्यूटर रटाया जाता है, लेकिन कंप्यूटर रटने की चीज़ नहीं है, that's it. कंप्यूटर Yes. समझने की चीज़ है और एक पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अप्लाई करने के तो लिए। तभी से मैंने ये सोच लिया कि भाई मैं एजुकेशन सेक्टर में जाऊंगा और बेसिक से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को जो है एक मुकाम पर पहुंचाऊंगा। ऐसा करके भी आप Yes, कुछ आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस thank तरीके you. से आप ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो विजन है वो क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, और एनालिसिस में भी कोई सैंपल डेटा आप ले सकते हैं। Sir, and sir, as NVS all are situated in rural areas, so there is a more requirement for teaching computer यस। in these area also. देखो अब एनवीएस जहाँ पर भी होगा वहाँ टीचर तो होंगे ही। बात टीचर Yes, की sir. नहीं है, बात ये है कि वो कितना कॉम्पिटेंट है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये है। हाँ, बात करते वक्त वैसे तो देखो कंप्यूटर का एक कैंडिडेट है तो कंप्यूटर वाले के बोलने की स्पीड हमेशा तेज़ी होती है, Yes, बहुत ही sir. फास्ट बोलता है। वो एक नॉर्मल टेंडेंसी है जो किसी भी कंप्यूटर साइंस के या कंप्यूटर जानने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करें कि थोड़ा सा पॉज लेके चले या फिर थोड़ा स्पीड कम करें तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़, कई बार ऐसा लगा कि हो सकता है ये जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो मैं बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहा था लेकिन आप काफ़ी आगे निकल जा रहे थे और मेरी बहुत सारी बातें आपको बीच में पहुंच रही थी। शायद ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा होगा कि थोड़े। But face to face it is different that when I see you are asking a question, I stop हाँ immediately. हाँ, तो ऐसा लग But रहा था लेकिन हाँ। अच्छा, कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं वेट कर रहा था आपका कि कब आप ख़त्म करेंगे। तीन चार okay, बार sir. मुझे लग रहा था कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या ए दिल है मुश्किल मूवी देख रहा हूँ। Okay. तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब खत्म हो गई फिल्म, चलो Sir, अब कुछ बात करूँ। it is the drawback of the platform that if we are face to face, then when I see that you are going to ask a question, I immediately stop and हाँ बिल्कुल। तो वो एक पॉइंट है, दैट इज़ ओके, लेकिन हाँ अपनी बात को ना कंक्लूड भी थोड़ा कंक्लूड भी करो जल्दी। yes, वैसे sir. आपने बहुत बहुत अच्छा बोला, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मैंने Yes, sir. पर्सनली फील किया वो ये फील किया कि कई बार आप जब बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि आपने ख़त्म कर दिया, Yes. लेकिन फिर उसके बाद आपने उसके बाद एक छोटी सी लाइन अटैच करी कंक्लूजन वाली, लेकिन वो कंक्लूजन नहीं होगी, वो तो डिटेल हो गई, फिर वो डिटेल में आगे चली, फिर फिर लगा कि कंक्लूड होगा, वो फिर आगे बढ़ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी बातें आपके पास है करने को, ये बहुत अच्छी बात है दैट यू Yes, हैव अ sir. लॉट ऑफ Sir, वर्ड्स टू स्पीक। sir, definitely I say na I have an interesting motivation that I want to be a teacher for like I see the students they don't even know how to open a system when they even come for the BTech after means so I know there is a requirement and sir अभी तक भी मतलब आप देखो ना दूसरी countries में they are studying the computer as from the means like they from the net what do you say the stage middle early childhood stage they are studying from that onward and we are teaching them from the 11th 12th where they half completed the study in the school so I am worried about this thing also this is a concern हाँ, अरे वो आपकी means बातों से झलक रहा था, मतलब जो एक डेडिकेशन जिसको कहते हैं या फिर yes सुटेबिलिटी जो जिसको कहते हैं वो आपकी बातों से झलक रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है उन सब चीज़ों में फुल मार्क्स है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वहाँ पर अगर आप yes sir थोड़ा सा ध्यान देंगे मुझे definitely ऐसा लगता है कि I बहुत ही बढ़िया होगा। आपको कोई रोक नहीं yes सकता, लेकिन कहते हैं ना कि चार चांद लगा देना, बस वही दो चार बातें मैंने ऐड करी। आप इस I वीडियो just की wanna hack this हाँ, वो मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको yes मिल sir. जाएगी। आप एक बार उसको अच्छे से देखना, मुझे ऐसा Yes लगता sir है कि उसको देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। ठीक है, yes sir बाकी बीइंग अ कंप्यूटर साइंस टीचर ज़्यादा आपसे डेमो वगैरह नहीं कराया जाएगा, लेकिन अगर फिर भी yes sir डेमो हो तो I'm कोई prepared छोटा for सा demo टॉपिक या कोई छोटा सा कोडिंग या कुछ भी आपका मन करे तो आप करा सकते हैं। yes sir क्योंकि आप बीइंग अ पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर आपको ज़्यादा एक्टिविटी मेथड और ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है कि ये था गमला yes sir नाच गाना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पॉइंट पे आ सकते हैं। yes sir ठीक है, सो because the students are cool means means they are have the sense of understanding the things or हाँ concept हाँ, क्योंकि वो they are सारे not like बच्चे yes, फॉर्मल स्टेज पर हैं तो कुछ ऐसा yes करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एब्स्ट्रैक्शन पे जा सकते abstract हैं। thinking वाले हैं हाँ, students they can तो वो कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इसमें आपको थोड़ा सा ठीक होगा, इसी वजह से मैंने डेमो भी नहीं लिया। इन केस अगर डेमो हो जाता है तो इसी तरीके से आप yes sir बात करना, बाकी थोड़ा बहुत मैंने जिस्ट दिया है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। sir a small request from my side that sir
This video do not post on No, no, YouTube because we I are am a not teaching posting any and video doing without jobs here. any. This video is being it is on live just for the course student. That's it. Yes, sir. The, Because sir, I am teaching somewhere and they find that I am involved means no in issues, no issue. sales. Yes, No, sir. the recorded video being sent to you is will be as unlisted video, and that is meant for your analysis only. So this is only the concern I. No, that Rest, sir, no clear. need to take any kind of concern. We make Okay, assure that privacy is maintained. okay, sir. Okay, Thank you very much. if you get selection, then only we'll think about Ah, it. then, sir, then I personally come to you, sir. Thank Okay, you, sir. okay, great to go. Okay, thank you. Can we sign off now? Yes, sir. Thanks for your Thank guidance, you. sir. Nice to Thank you talk to very much. you. Bye bye, Gaurav. Same here, sir. Thank you, sir.